Okay, Max. So, like I told you, I'll be ignoring the introduction part because we have been very regular for mock interviews. So, the first question that you will be answering is, what are the most interesting part of this curriculum that you will be going through in IRMA? So I think the most interesting part about the curriculum is that when I was going through the website and the course, I noticed that as soon as you join the campus, I think after the first coursework, there's a brief induction fieldwork segment where you visit like a village in Gujarat for a period of 4 5 days where you live with the host family, and that serves as a precursor for the later village fieldwork segment where you spend around 8 weeks in a village in India. So I think that I found it very interesting because I think that you can go on ground and see the reality of rural India and experience how things work there. Additionally, this isn't a part of the coursework per se, but I really found it interesting how IRMA addresses all of its students as participants, and so that it gives them the accountability, and they're proactive in the entire learning process. Okay. Any other thing that you want to add in the same question answer? No, it's, I mean, since the course is for rural management, it's also interesting to see how IRMA combines things from a traditional MBA, the subjects that are there in traditional MBA like marketing or economics, and combines them with the subjects or the things that are there in the development sector. So I think it forms a perfect balance in that sense. Okay. So if we talk about rural management, what are the differences that you see between management in urban area and management in rural area? So I would say that management in urban area is different from management in rural area. Firstly, in terms of the resources that are available, because while in urban area you might have plentiful of resources, in a rural area you might have to make do with things that are available to you with limited resources. But Uh, but but Mehak, the company who is working in urban area, the same company will also work in rural area. So there is no lack of resources there. Like if you want money, if you want manpower, if you want anything that you count as a resource for a company. So if a FMCG company wants to sell products in urban area, the same company wants to sell their product in a rural area. So there is no lack of resources, I think. Okay. So if in that sense, if we talk about the differences between urban and rural area, are we talking about how the market is different then, or just in terms The of entire the management process, whatever management function that you can visualize, that they are different in these two areas, you can talk about that. okay, could I just take a few seconds to think about it? Yeah, you can. Um, I would say that in terms of management in rural areas, I think in terms of rural areas, we might have to begin from the very base level and from the scratch level. And if we involve the population that's there also, I mean, you will have to train them and then involve them in the entire process as compared to the urban area where you might find people very easily with different skill set. Okay. So let's leave that topic. Let's go for the understanding of rural society. So how do you think rural society is different than urban society? So there are various differences between a rural and urban society. Firstly, in terms of a rural society, it's very close knit, and since it's very close knit and people know each other there. So there's a sense of belongingness, sense of community there as compared to an urban area where since people live very fast paced lives, you that sense of connectivity is not there. Like you might only be connected with your immediate family and not with your neighbors or your society as a whole. Other than that, I think in a rural setup,
the things don't happen very fast. Like people there will need some time to adjust and accept a new idea, uh, as compared to an urban society where the willingness to adjust or try new things comes more easily. Okay. So, Mag, you have never been in rural area because all the years that you have studied was in urban area only, and probably you might have visited village for a few times, but that doesn't give you that much of insight or uh, perspective about rural society. And but still, you have opted for IRMA. So, may I know, will you feel comfortable in working in rural area and going for a place where you won't have modern amenities there? So are you prepared for that? I do think I'm prepared for that because I think it will be a different experience and it will help me get outside of my comfort zone. Even I do understand that since I've never lived in a rural area, and going there 1 or 2 days, spending just half a day there doesn't really count. So I don't really know how it will be, but I'm sure that it will prove to be a new experience and I will be able to adjust there and make the necessary alterations or changes that I would have to make in my lifestyle. Okay. So, what do you think about the? Uh, let's change the topic here. So, do you know how cooperative works? I have a brief idea about how cooperatives work. Basically, there's, like as opposed to earlier times when there was a middleman. So in a cooperatives, there's no middleman, and additionally, there is no involvement from outside sources or even the government for that matter. And it's a self-sustaining model where the people of a village or a particular area have been trained how to function that. So yes. Okay. So last year, the government of India has passed a parliament has passed a bill on cooperative bills. So, do you have any idea about that? So I haven't read about that bill yet. Okay, so you should read Yes, as, I will do as that. soon as possible. So the last question for you, Mac, will be, uh, why don't you apply for other MBA program which are not in rural perspective, probably in the field of HR or marketing? So you as an individual, like let's reframe the question. You as an individual will contribute or will be very productive in which area? Will it be rural management or will it be HR? So I think I would be able to contribute equally in both the areas because I do feel that I'm very confident about my skills. And as far as a career in say HR, a traditional career in HR or marketing in a corporate, I do understand the challenges that would be there in the rural setup, but I'm aware of my skill set and I think I would be able to apply them as easily and effectively in any setup. ओके, चलो थैंक यू। तो मैं ये फिर से क्या हो गया कि जैसे ही रूरल पर्सपेक्टिव पे बात जाती है ना, यू वो बिकम मैंने भी वेरी देखा। वो वेग और बिल्कुल जैसे नो आइडिया नहीं होता किसी फॉरेनर से बात कर रहे हैं। अब ऊपर से मैं अभी 5 दिन गांव रह के आया हूँ, तो मुझे तो एकदम तो फील मुझे तो होता है। समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ क्या? मतलब मेरे तो अच्छा क्वेश्चन सुनो के तो बाद सही, इतनी ऐसा बात हो ऐसा गई। ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा तुमसे, तो rather than telling कि तुम you are confident over your skill set, you बोलो कि you are passionate about working for people, है ना? जब आप गांव में जाओगे, विल वर्क फॉर गांव, ठीक है, आपको लर्निंग में टाइम लगेगा, यू डोंट हैव दैट बैकग्राउंड, बट यू आर अ क्विक लर्नर, है ना? यू हैव सीन इन योर लाइफ दैट you never faced any problem in performing in new situation, in whatever Hmm. new situation you have got. So Hmm. again, the rural market is a new situation for you, है ना? Hmm. But it's not impossible situation for you. And Hmm. since you have an empathy for, because your parents run an NGO, मतलब dad NGO run करते हैं, and your mother also is working in a school, so you know the education or how things works for मतलब poor people, or how do we provide services to poor people. You have Hmm. seen in your family, so Hmm. basically you have that passion to adapt yourself for that greater good or greater Hmm. cause. ठीक है, ये Hmm. बोल सकते हो। दूसरा जो मैनेजमेंट वाला जो क्वेश्चन पूछा, वहां पे Hmm. बहुत वो था तुम्हारा आंसर बहुत अच्छा नहीं था। जब हम Hmm. बोलते हैं कि डिफरेंस क्या है रूरल और अर्बन मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट के फंक्शंस पे बात करते हैं। जैसे मान लो कि मैनेजमेंट के फंक्शंस जो भी तुम जानते हो, जैसे एचआर, ठीक है। Hmm. तो अगर अगर अर्बन एरिया के एम्प्लॉयज जो हैं वो ज्यादा वो होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं कि दे आर वेरी मनी माइंडेड,
मतलब कितना पैसा दे, कितना ले, ऐसा सोच रहे हैं, मतलब कि कितना काम करे। रूरल एरिया के एम्प्लॉयमेंट में, रूरल somebody is coming from rural environment and is your employee there, तो आपको थोड़ा फैमिली फीलिंग डेवलप करना पड़ेगा। दिस इज द डिफरेंस Okay. व्हेन यू डू इन Hmm. एचआर। जब हम Hmm. मार्केटिंग की बात करेंगे तो मार्केटिंग में उससे कि चूंकि अर्बन कस्टमर, अर्बन क्लाइंट्स होते हैं, वो दे आर मैच्योर, दे आर वेल रेड, they can understand whatever you are telling them. But Hmm. a rural area, they will first they will judge you on the cultural basis or on the every aspect. तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम उनके कल्चर को तो नहीं वो कर रहे हैं, मतलब पिन पॉइंट कर रहे हैं, या फिर आपको ये भी ध्यान रखना कि दे आर नॉट अवेयर, दे आर नॉट एजुकेटेड इनफ, दे डोंट हैव दैट एक्सपोजर कि वो आपकी बात अच्छे से समझ सके, है ना। Hmm. दूसरा क्या है कि मार्केटिंग में आपको अर्बन एरिया में, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर द प्रोडक्ट, रूरल एरिया में दे विल यू विल हैव टू शो द प्रोडक्ट कि ये भी एक चीज है जो आप यूज कर सकते हो, बिकॉज यू हैव नॉट बीन यूजिंग दैट, है ना। तो ये Hmm. मार्केटिंग में तुम बता सकते हो। फिर ऑपरेशंस में तुम बता सकते हो कि सिंस अर्बन में क्या होता है, टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी होती है, तो यू कैन कीप योर इंटायर सप्लाई चेन और ऑपरेशंस टेक्नोलॉजी ड्रिवन, है ना। रूरल एरिया में इट यू हैव टू डू मेनी थिंग्स मैनुअली, है ना, बिकॉज टेक्नोलॉजी Hmm. विल नॉट, जैसे राशन डिस्ट्रीब्यूशन का था, अर्बन एरिया में तो चलो ठीक है, दुकान पे हमने मशीन लगा दिया तो जो भी राशन बांट रहा है वो पता चल जाएगा। रूरल एरिया वाले बोलते हैं मेरे पास नेट ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात। तो ऑपरेशंस में ये सप्लाई चेन में क्या है कि अर्बन एरिया जो होते हैं वहाँ के मार्केट बड़े होते हैं, तो मतलब एक एक लॉजिस्टिक आप सेटअप करते हो तो यू कैन सर्व द इंटायर अर्बन एरिया। बट रूरल एरिया क्या होता है, डिस्पर्स होता है, छोटे छोटे मार्केट्स होते हैं, सो वहाँ पे लॉजिस्टिक के इशूज आएंगे, तो ऐसे मैनेजमेंट फंक्शंस। बट अगर तुम कोर देखो स्ट्रेटजिक लेवल पे क्या है, तो भाई स्ट्रेटजिक लेवल में जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करना है, जो अर्बन एरिया में करना है, रूरल एरिया में करना है, दैट कैन बी डिफरेंट। दिस इज हाउ यू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रूरल मैनेजमेंट एंड अर्बन मैनेजमेंट। ठीक है। ठीक है, द वे यू वर टॉकिंग वो नहीं था। और Hmm. दूसरी बात, जब सोसाइटी में डिफरेंस बनाते हैं तो क्लोज निट की जरूरत नहीं है, यू कैन स्टार्ट विद कि जॉइंट फैमिली ज्यादा होते हैं, है अच्छा। ना। Hmm. इधर न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा होती है। जो इसमें जो गांव मतलब रूरल एरिया में जो वो होती है बाइंग पैटर्न, या सोसाइटी की जो भी कल्चरल फॉलोइंग ज्यादा होती है, ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स को ज्यादा वो करते हैं, वेटेज देते हैं, सिंस देयर ऑक्यूपेशन इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चरल रिलेटेड ही उनकी लाइफस्टाइल होती है। मतलब जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं वो एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है, तुम्हें पता है ना, मतलब जितने भी फेस्टिवल हम करते हैं वो कब फसल ये तो कटती पता है, है। कब ज्यादा होता है, तो उस हिसाब Hmm. से उनकी लाइफस्टाइल मैच रहती है। हम लोग तो क्या करते हैं कि हम Hmm. छुट्टी लेते हैं, मतलब हो सकता है बहुत पीक टाइम में भी छुट्टी लेना पड़ जाए फेस्टिवल की वजह से, तो वहां पे वो सिंक्ड है कल्चर और उनकी लाइफस्टाइल। तो इस तरह का डिफरेंसेस बता सकते हो, रेदर देन जस्ट शोइंग की क्लोज नेट इज लाइक, मतलब बस एक पार्ट ऑफ तुम बता रहे हो, ठीक है। तो ऐसे Hmm. तुरंत कैटेगराइज कर दोगे ना तो वो थोड़ा आंसर ज्यादा आएगा। और तुम ये भी हमेशा बोल सकते हो कि सिंस आई डोंट हैव एनी एक्सपोजर है, एनी गुड एक्सपोजर इन रूरल सोसाइटी, सो व्हाटएवर आई विल बी टॉकिंग विल बी बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशन ऑन, मतलब ठीक मतलब है। थ्रू टेलीविजन। और वो तो ये बोल रहे हैं ना, कोई बुरा बात नहीं है। देखो, वो मार्क देने वाला है, वो बेसिकली जानना चाहता है कि तुम कितने पैशनेट हो, वो गांव की नॉलेज पे तुम एडमिशन नहीं देना है, ठीक है। Hmm. और तीसरा चीज ये था, कोऑपरेटिव लॉ और कोऑपरेटिव के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ पढ़ लो। लूंगी। वो एसएसजी, माइक्रो फाइनेंस, कोऑपरेटिव और सोशल सिक्योरिटी, ये चार पांच चीजें जरूर पढ़ लेना। सोशल सिक्योरिटी इसलिए बिकॉज रूरल एम्प्लॉयमेंट जो होता है ना, लोग क्या होते हैं कि वो बेसिकली डेली बेसिस वाले होते हैं, या फिर मतलब वॉट एवर दे आर वर्किंग एंड दे आर गेटिंग मनी, इसी पे बेस्ड होता है। तो उनका जो मंथली ठीक है। सैलरी नहीं होते हैं, दे डोंट हैव पीएफ और पीपीएफ वाला ये थिंग Hmm. with them, तो वो सोशल सिक्योरिटी डेवलप करना। तो व्हेन यू वर्क फॉर रूरल मैनेजमेंट, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट रूरल डेवलपमेंट, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैसे आप उनकी सोशल सिक्योरिटी को अल्टरनेट वे में डेवलप कर सकते हो, जो कि कंपनी स्पॉन्सर्ड नहीं है या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड भी नहीं है। एंड दैट Hmm. हाउ माइक्रो फाइनेंस वर्क। तो कोऑपरेटिव भी ऐसे ही काम करते हैं। जैसे बहुत सारी लेडीज जो हैं अलग अलग खिलौना बना के बेच रही है, और हमने क्या किया, उसको कोऑपरेटिव बना दिया। सो तो मैंने ना, वो भी देखा था। एक एक डॉक्यूमेंट्री है, पीरियड द एंड ऑफ सेंटेंस, तो वहां पे हाँ, उन्होंने मशीन सेटअप करी थी। तो वो मतलब बेसिकली पैड क्या होता लेनी है थी। कि हाँ, तो जैसे बहुत सारी लेडीज अलग अलग क्रिएट कर रही हैं, हम्म। आपने उनको कोऑपरेटिव बना दिया। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई लड़की लेडी अगर बीमार है किसी टाइम में, तो शी विल नॉट हैव द एम्प्लॉयमेंट लॉस, है ना, शी विल बी गेटिंग मनी ऑन द अकाउंट ऑफ, बिकॉज शी हैज वर्कड प्रीवियसली। तो बेसिकली उनके में एक फैमिली फीलिंग होती है कि हाँ भाई, आज वो काम नहीं किया तो आज हम कर रहे हैं, तो कल हम नहीं करेंगे तो और लोगों के काम का फायदा हमें मिलेगा। सो अच्छा। कोऑपरेटिव का ये तो अल्टरनेट एडवांटेज है। बट देयर इज अ वे टू
मतलब वर्क कोऑपरेटिव, और एनजीओ के बारे में भी पढ़ लेना, ठीक है? तो किसके ये बारे में? सब एनजीओ एनजीओ कैसे काम अच्छा, करते हैं, ठीक है, ठीक ठीक है, है? ठीक है। हाँ, रूरल सेक्टर के एनजीओ, ठीक है? बाकी सब ठीक है, तुम करो, एक बार और इंटरव्यू लेंगे, तो है कल ना? ले अब लो, कल ले हाँ, लो। कल ही करते हैं। तो ये हुँ। फिर से क्या हो गया ना कि शुरू